कि भाई आज सैटरडे कैसे आ गए लाइव करने। दावा है मेरा मंडे टू फ्राइडे आपसे मिलने का। 2 दिन मैंने मिस किए अलग अलग स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। तो मैंने कहा यार सैटरडे को तो बनता है थोड़ा आधा घंटा आपको देने का। I'll be around for half an hour. Not can be around much longer क्योंकि मैच शुरू हो जाएगा 7 बजे। बट टॉस के समय तक मैं हूं आपके साथ। यदि आपके पास कोई सवाल है आज के मैच को लेकर तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, खुद की आवाज सुनकर टाइम पास कर लूंगा। सेकंड मैच दोस्तों, पहला मैच को लेकर तो आपने मेरा रैंट देखा ही होगा। आप में से बहुत व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े थे उस दिन जब मैं रैंट कर रहा था। फिर मैंने उस रैंट का एक हिस्सा, कुछ 5 मिनट का हिस्सा काट के मैंने उसे एज अ सेपरेट वीडियो अपलोड किया था। आई एम श्योर यू हैव सीन दैट। इफ नॉट, हैव अ लुक एट इट। मैं तब तक उस लिंक को यहीं पेस्ट करता हूं आप लोग के लिए। आप आराम से इसको देख सकते हैं फुर्सत में। वेयर इज दैट? यस, हियर इज दैट short 4.5 minute clip of my rant from the last match. Let me paste it here. आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं इसको पिन भी करूंगा। पिन दैट फॉर यू। आई हैव पिन द मैसेज राइट ऑन टॉप। बाकी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। वेल, मैं देख रहा था वीडियोस वहां से, वेस्ट इंडीज से। बारिश पड़ रही थी काफी, तो मुझे मेरे हिसाब से मैच टाइम पे तो शुरू नहीं हो गया। गलत टाइम सेट कर दिया पाजी। मैंने कौन सा टाइम सेट कर दिया? मैंने तो 6 बजे का टाइम सेट कर दिया भाई। नहीं, क्या मैंने कौन सी गलत कर दी? बताओ भाई माय फ्रेंड CFC ब्लू। मेरे हिसाब से तो मैंने सही टाइम लगाया था। कुछ गड़बड़ है क्या? नॉर्मली करता नहीं हूँ मैं इस टाइम पे, बट नहीं, टाइम तो सही है भाई। टाइम तो बिल्कुल सही है। मैंने 6 बजे का वादा किया था और 6 बजे स्टार्ट। क्या कह रहे हो आप? 4 4 4 4 4 मिनट 4 मिनट कॉमेंट्स। यार देखो, आप लोग हमेशा करते हो, लेकिन आप लोग इतने सवाल पूछते हो मुझसे कि ऑफन टाइम्स आई डोंट हैव टाइम टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई नो आप लोग के पास बहुत बहुत सवाल होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा गैप रखना पड़ता है। नहीं तो अगर मैं एक सवाल को लेकर लंबा जवाब दूं तो बीच में जो 10-15 कमेंट निकल जाते हैं, वो लोग खफा होते हैं कि मैंने उनका जवाब नहीं दिया। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ 4 मिनट गैप बिटवीन कमेंट्स। कभी एक बार 2 मिनट करता हूँ, 2.5 मिनट बनाता हूँ। और आज बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि जो रायता फैलाया पिछले मैच में इंडियन टीम ने, आई थॉट मे बी उसको लेकर लोग कुछ नाराज होंगे और बहुत जज्बाती होकर यहाँ पे आएंगे। दैट्स व्हाई भैया मैं कर चुका हूं। मैंने 2 मिनट ट्राई किया, मैंने 1.5 मिनट ट्राई किया, मैंने 3 मिनट ट्राई किया, लेकिन भाई बहुत बहुत आई आई नो यू गाइस आर फ्रस्ट्रेटेड, बट यार मेरे बारे में सोचो यार। मैं एक एक बंदे का सही सही सवाल का जवाब सही दे रहा हूँ, और उस बीच देते देते यार 15-20 कमेंट निकल जाते। तो इट्स अनफेयर ना। आई वांट टू गिव एवरीवन अ फेयर चांस ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। सम ऑफ यू आस्क 8 क्वेश्चन, सम ऑफ यू ओनली आस्क 1 क्वेश्चन। तो जो लोग एक सवाल पूछते हैं, आई आई थिंक इट्स फेयर। सो डोंट माइंड। आपको बुरा लगे तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्टिक टू माय स्टैंस एंड आई एम गोइंग टू कीप इट अ 3 to 4 मिनट। आज मैंने 4 कर दिया, ये सोचे कि बहुत लोग आएंगे। आज कम है तो चेंज कर सकते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सुबोध कह रहे हैं क्या लगता है सर, डब्ल्यू वर्ल्ड कप में 11 खिलाएंगे या नहीं? क्योंकि 15 बढ़िया होते हैं बट 11 क्लोज होते हैं। हाँ भाई, सही बात है। बहुत बहुत गड़बड़ है इस टीम में। Even though World Cup is near, says Ayush, and India itself, and also India will be playing 3 ODIs and 5 20Is against Australia. या T20 तो नहीं, ये तीन तीन वनडे सीरीज हैं, उसके बाद T20s। आई बिलीव दिस सीरीज इज स्प्लिट। आई डोंट थिंक इट्स ऑल इन वन गो, क्योंकि टाइम नहीं है। टीम एशिया कप से लौटेगी, अब बहुत ही कम समय है। उस टाइम में वो 3 वनडे खेलेंगे। T20, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो वर्ल्ड कप के बाद है। Kiran Bhandari, loyal viewer from Nepal, is back, and Kiran says, really excited to see our inexperienced lower order batting of Rohit and Kohli. Kohli should come in 8 today in 7. गुरवान किरण किरण आपकी किरण आज सैटरडे के दिन थोड़े मस्ती करने के मूड में है भाई। मैं तो वेल, you heard my rant, no? It's the rant I've pinned at the top of this chat after yesterday's परसों का match. I said you didn't even want to pad Virat Kohli up. You wanted to have Rohit Sharma. काफी आसान था रोहित शर्मा के। एक दो तीन कमेंट भी आए कि रोहित शर्मा शायद घबरा गए कि भाई बॉल घूम रही है, मुश्किल स्थिति है, मैं आखिरी में आऊंगा नंबर 7 पे। आई डोंट थिंक इट वाज दैट डेस्परेट मूव, बट यार मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत गलती करी इन्होंने। ईशान किशन को ओपनिंग भेज के, सूर्य कुमार यादव को 3 पे भेज के, जड्डू को 5 पे भेज के, शार्दुल ठाकुर को 6 पे भेज के, रोहित शर्मा को 7 पे भेज के, और फिर विराट कोहली को पैड अप नहीं करना। भाई 115 का टारगेट था। सभी को मालूम है कि वेस्ट इंडीज ये सीरीज नहीं जीत पाएगी। भारतीय टीम 3-0 मार्जिन से ये श्रृंखला जीतेगी। क्या जरूरत थी फालतू स्टेप्स लेने का यार। एनीवेज, यू नो माय व्यूज। आज क्या हुआ आज के मैच में? लगता है क्या
मेरा सवाल आप लोग के लिए, do you think it's going to be the same template across the three matches, यानी कि experimenting, Sanju Samson not getting a chance, Mukesh Kumar playing every match, Chahal sitting out? Do you think there'll be changes? Let me know. शाहनवाज पूछ रहे what is the weather? Well, एक घंटे पहले मैंने चेक किया था वहां का फोरकास्ट, और मैंने वीडियो देखा विमल कुमार के लाइव स्ट्रीम पर, और घनी बारिश हो रही थी, तो मैच टाइम पे शुरू तो नहीं होगा शाहनवाज। बाकी आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है, आप पूछ सकते हैं मैच को लेकर। बारिश तो पड़ेगी, शायद थोड़ा डिले हो जाए मैच, बट लेट्स होप ओवर्स नॉट कट, क्योंकि भाई देखो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में यार क्या ये कोई मुकाबला तो है नहीं। 15 ओवर गए भी तो वेस्ट इंडीज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया वैसे ही वेस्ट इंडीज टीम को 30 मैक्सिमम 35 ओवर के अंदर बोल आउट करेगी। आई होप इंडिया चूजेस टू बैट फर्स्ट, बट आई थिंक इफ इट्स हैज बीन रेनिंग, अगर पिच गीली है, अगर मॉइस्चर सीप इन कर चुका है पिच के नीचे, कवर्स के नीचे, तो आई डोंट थिंक इंडिया विल probably bat. You want to bowl first, but I would have wanted India to get a bit more batting practice and perhaps bat against his attack, but नहीं होगा। रोहित शर्मा है, कुछ भी हो सकता है। Do we have any update? No, we have no update. We're 23 minutes from the toss. फिलहाल कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है मुझे, but like I said, post your thoughts. Do you think India will make experiments? Is this the template that's been set? यानी कि 3 फास्ट बॉलर, दो पेसर्स, क्या मुकेश को बाहर करके जयदेव को खिलाएंगे? You think उमरान मलिक, who bowled only 3 overs and was bowled very late, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा खेलने का? Will Samson get a match, or will Samson be carrying drinks this whole series? I don't know. I don't know. Akshay Patel. I thought Akshay Patel should have played instead of Mukesh Kumar, क्योंकि मेरे हिसाब से अक्षय पटेल भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जरूर रहेंगे, और मुकेश नहीं रहेंगे unless one of the fast bowlers gets injured. Because we all know कि सिराज वापस आएंगे, शामी वापस आएंगे, और टीम पूरी कोशिश करेगी जसप्रीत बुमराह को फिट करके वापस स्क्वाड में डालने का। So I don't know. मुकेश कुमार, I know he got a wicket, but when you're bowling 135, 132, यार आपको थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी आपको to stay in regular contention for India's one day team. वर्ल्ड कप तो भूल जाइए, पर आपको पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। बाकी तो मुझे चहल चहल के एब्सेंस से कोई सरप्राइज नहीं था। मैं कब से कह रहा हूँ कि चहल has only played 6 matches in the last 12 months for India, ODI matches, and Kuldeep has played 16 matches. He's taken 29 wickets. तो साफ मालूम पड़ता है कि team is backing Kuldeep and taking those 4 wickets for cheap. I know it was 3 of them were the tail enders, but फिर भी आपको हर परफॉर्मेंस में, खासकर वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले, आपको हर परफॉर्मेंस में, हर मैच में परफॉर्मेंस देना पड़ता है। So good to see कि Kuldeep did that again. He's got a very good record against West Indies. He's got a good record in the West Indies. The conditions will of course suit his kind of bowling. So good. निहार, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसे हो बताइए, कोई कमेंट है, सवाल? मेरे पास सिर्फ 21 मिनट बाकी है, टॉस तक मुझे ये स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा। बट हु आर गोइंग टू बी आवर डेथ बॉलर्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर बुमराह नहीं आते हैं, आई नो कि शामी इज बोल्ड अ लॉट इन द डेथ, सिराज हैज डन द जॉब, बट देयर नॉट, क्या कहूं मैं, देयर नॉट regular, yeah, reliable death bowlers. Shami's problems with the death have been exposed both in the T20 format and the one day format. Siraj is primarily done far, far better up front or in the middle. तो मेरे हिसाब से वो हो सकते हैं, बट उनका नेचुरल रोल नहीं है। शार्दुल ठाकुर रन्स खाते हैं, पर वो भी एक स्पेशलिस्ट डेथ ओवर बॉलर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि टीम या तो उमरान मलिक या जो भी है ऑप्शन, आप उनको अभी से इस सीरीज में उस डेथ ओवर्स के लिए रखें। लेकिन पिछले मैच में तो यार डेथ ओवर छोड़िए, आधा मैच भी नहीं खेल पाई वेस्ट इंडीज। सो it's a tough one. If Arshdeep had, माफी चाहूंगा, if Arshdeep had been playing a lot more one days as compared to 3 1 days in the last 2 years, you could have said he'll be there, but he's in the Asian game squad, so he's definitely not going to the World Cup. So yes, Kiran Bhandari, भाई, डेथ ओवर्स आर अ प्रॉब्लम। आयुष कह रहे हैं बोरिंग गेम्स वर्सेस वेस्ट इंडीज, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। थकेले मैच है ये। आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग टेस्ट फॉर WTC एंड लिमिटेड ओवर्स फॉर इंक्रीजिंग their revenue. England will run save this test. England won't save this test. England will win this test. Today, I think Surya doing something good, says Satej. Maybe 75. It's a good score. I think Surya Kumar Yadav, given how poor he's been in his ODI career, he would give a left arm to score 75. लेकिन सवाल ये है सतेज आपसे, अगर स्काई को 75 रन मारने हैं तो कौन सी जगह पे उन्हें खेलना चाहिए? 3 पे तो नहीं खेलेंगे वो। If he's playing at 5 or 6, I think he's better off getting
getting a score like 70, 75. Shahnawaz keh rahe, I have seen from past ODI and T20 World Cup experimentation has not been fruitful when World Cups are near. Absolutely, you're right. Why don't they consider this our ODI World Cup team will back them continuously? There are reasons for loss in WC. मैं वही कह रहा हूँ. मैंने rant भी किया था परसों इसी टॉपिक को लेकर. I don't know. Very, very strange. Will West Indies fight back? Akash, we would love to see. I think we'd all love to see a contest. But just given, excuse me, given how bad their cricket is in one day format, remember, this West Indies team failed to qualify for the World Cup this year for the first time in their history. So it's a sad statement on how poor their one day cricket has gone. And against India, because West Indies don't have good players of spin, you know. जिस तरह से जडेजा ने 3 विकेट निकाले जिस तरह से बड़े चुटकी में Kuldeep ने 4 विकेट लिए. I would drop a pacer and Mukesh. I would play Akshar Patel today. Just if you're gonna beat them, smash them. You know, so they cannot play spin. The last tour when Akshar and Kuldeep took wickets, that was enough evidence. And एक मैच के बेसिस पर साफ मालूम पड़ता है कि वेस्ट इंडीज नहीं कर पाएगी फाइट बैक. भैया आईसीसी कई पागल है जून आईसीसी कई पागल है जून में वर्ल्ड भैया आईसीसी कई पागल है जून में वर्ल्ड कप जून में कौन सा वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप हाँ T20 वर्ल्ड कप का विंडो वही बना और अगर विंडो सिर्फ जून के महीने में बनता है तो दो ही ऑप्शन है 2019 वर्ल्ड कप वाज इन जून मंथ ऑफ जून इंग्लैंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ वर्ल्ड कप पर वेस्ट इंडीज में ठीक है वेस्ट इंडीज में इतनी बारिश नहीं होती है बहुत से टीम्स टूर करती हैं वेस्ट इंडीज तो अगर बीसीसीआई अगर आईसीसी के पास सिर्फ एक ही विंडो था जून का तो फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में ही वो हो सकता है एंड आई नो अमेरिका इज होस्टिंग अ फ्यू गेम्स बट जून में वर्ल्ड कप कोई नई बात नहीं है 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था उस समय एंड इंग्लैंड का वर्ल्ड कप जून में हुआ था 75 में हुआ था जून के महीने में 79 में हुआ था जून के महीने में 83 में हुआ जून के महीने में 1999 में हुआ जून के महीने में तो जून में वर्ल्ड कप करना कोई नई बात नहीं है मैक्सिमम वर्ल्ड कप्स अगर इंडिया का एशिया के बाहर है तो वो जून में ही हुए हैं Is Bumrah fully fit? Craig Person have an article. Bumrah is fit in the sense that he's ticked all the boxes to get to pass the test, but he's not match fit. एक होता है physically fit, as in getting your body ready to start bowling, but he's not match fit yet. He's been playing a series of internal matches at the NCA in Bangalore, but again, these internal matches, जैसे कि मैंने बताया एक लाइव स्ट्रीम पर पहले, ये इंटरनल मैचेस ये बड़े कंपेटिटिव मैचेस नहीं ये बेसिकली लोकल स्टाफ नेट्स बॉलर और एक दो लोकल क्लब बॉलर्स के बीच होता है यस ही इज गोइंग थ्रू हिज पेसेस बट ही इज प्रॉब्ली नॉट बॉलिंग फुल टिल्ट और सामने के बैट्समैन भी इतने ज्यादा नहीं है ही प्लेड अ कपल ऑफ दीस ही इज मेकिंग वेरी वेरी गुड प्रोग्रेस एंड यस मोस्ट लाइकली ही विल गो टू इंग्लैंड but I still think it's a long, long way from getting back to bowling 10 overs in a one-day match, especially in India where you have to really break your back. So the fact that he's going to Ireland, this has been discussed on this channel many, many times. But I don't think there's any point sending Bumrah to Ireland for two reasons. One, Ireland in the month of August is very wet. They're playing 3 T20Is. Probably at least two of those are going to be rain hit. और अगर रेन हिट ना भी हो तो वो सिर्फ 4 ओवर फेंक सकते हैं आपको वर्ल्ड कप के लिए बुमराह से 4 ओवर तो नहीं चाहिए आई वुड मच रादर गिव हिम मोर टाइम spend more time at the NCA, play more of these internal matches, get your body match fit, and then go to the Asia Cup in Sri Lanka. I would much rather see him bowl in the Asia Cup rather than 3 meaningless T20Is because it's a one-day World Cup year. It's not a T20 World Cup year. Kiran saying if with only 6, 7 matches left, time is over to pick Sanju. They don't want him. It looks like it because, see, Kiran, in total, if India make the Asia Cup final, there are still 11 one-day matches. आज के मैच को अगर हम इंक्लूड करें तो अभी 11 one-day मैच बाकी हैं भारतीय टीम के लिए to decide what is their best 11 for that first match against Australia in Chennai. But the bigger issue is you cannot wait. You have to announce the World Cup squad just when the Asia Cup is starting. यानी कि आपको World Cup squad बहुत पहले से announce करना पड़ता है. You have to announce it when the ICC says. So technically India only have 2 more ODIs. आज का ODI वेस्ट इंडीज के खिलाफ और फिर तीसरा ODI वेस्ट इंडीज के साथ. By the time the Asia Cup starts, you would have already had to announce your squad. So how many changes can you make after announcing it? What if Bumrah, Rahul, Siraj, Shreyas Iyer, what if they're not 100% fit by the time the Asia Cup starts? You've still got to name your World Cup squad. So it's a massive challenge ahead of the Indian team. So it's actually not 6, 7 matches. It's actually 2 matches left
before you announce the squad. So very very tricky. Hello Akash, welcome back. Anish Mondal कह रहे हैं मैच डिले हो जाएगा आज. सुनने में आ रहा है जो मैंने वीडियोस देखे विमलवा के चैनल पर काफी 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 बारिश हो रही है. So let's see. There's a 50% chance of rain during the match. लेकिन जो विमल भाई के मैंने YouTube चैनल पे उनके उनके लाइव वीडियोस देखे मैंने वहां तो बारिश बहुत हो रही थी. So it looks like we're in for a delay, but देखते हैं क्या है. Let's see how it goes. Any update coming in from the other websites? No, अभी नहीं है. What do you think about every year an IC tournament? Shrimoy, my friend, it's very, very tough because we're already facing a real cramped calendar challenge. You know, three T20 leagues came up, three big market, big ticket, expensive money spending T20 leagues came up this year. You already have the World Test Championship cycle going on for 2 years. You have the IPL, which goes on for two plus months. There's just no space every year to have an ICC event. Plus, that might also dilute the value of an ICC tournament. I would say, like I've said before on these live shows, keep the World Cup, the one day World Cup every 4 years, keep the T20 World Cup every 2, 3 years, but bring back the Champions Trophy, make that every 2 years, because what that does is it gives the ODI format some context. It reduces the number of random, meaningless bilateral series. Have tournaments, expand them to 14 teams, make it a mini World Cup because the challenge in front of the ODI format is to stay relevant and to not lose its fan base. And I think ये मेरा ये मानना है कि fans चाहेंगे random 5 मैच के bilateral series between India and New Zealand, India, Sri Lanka, India, West Indies, जहाँ India हर टीम को पेल देती है. They would much rather see the Indian team, challenged. And given the fact that Indian teams have struggled at IC tournaments for the last 10, 12 years, I would think that's a much more competitive way of going about it. Why team management is not following Dhoni's tactic of playing same team till World Cup? Well, Nihar, I've been saying this for the last many, many months. It's because Dhoni was Dhoni and Rohit is Rohit. Zameen Asman ka fark hai, bhai, Zaman. Allah, Zameen Asman ka fark. If West Indies scored more than 200 is tricky for Indian batters. Yes, Satish, it would be tricky if the conditions are the same as we saw in the match day before yesterday. It's the same venue, shouldn't be a massive difference, but given the amount of rain going around, you probably want to bowl first. So look, you're right. If the West Indies had managed to put up a bigger total, and given the fact that 115 was so tough for that team to chase, but again, I just go back to West Indies की टीम इतनी खराब बैटिंग कर रही है, इतनी खराब फील्डिंग कर रही है, और खासकर इनका जो स्पिन के सामने गेम है, it doesn't give me much hope that they'll be able to get to 200. शिवम दवे कह रहे हैं इंडी जिमी भाई. वेल, आप मेरी बात से सहमत है. आई डोंट नो कौन सी बात से आप सहमत है, बट थैंक यू. Just an opinion, says Kiran. I think having stakes will certainly be better, but won't make much difference. Simply format of ODI is such a cocktail and so long, and I doubt stakes will make a huge difference. No, you're right. It's not going to make a huge difference, but at least you're playing for something, right? WTC, the World Test Championship, what that does is it gives the team incentive to win matches. You win, you need maximum points. ये जो दूसरा टेस्ट मैच वॉश आउट हुआ था अभी वेस्ट इंडीज में, इंडिया वर robbed of vital points, whereas Pakistan have now beaten Sri Lanka 2 matches away. So Pakistan are actually far ahead in the race to get to the WTC final. So India now understand that they cannot afford to lose many matches and they cannot afford many draws. वनडे में क्या है, अगर अगर आपका वनडे क्वालिफिकेशन सिनारियो नहीं, अगर स्टेक्स नहीं है, फिर तो सिर्फ आप रैंकिंग्स के लिए खेल रहे हो. एंड रैंकिंग्स वी ऑल नो आर अ फार्स, राइट? The biggest proof that the rankings are a farce. India are ranked number one in T20Is. Does anyone on this live stream even rate India's T20 team? This is the same T20 team which could not reach the final of the Asia Cup last year when it was played in a T20I format and then got hammered after barely managing to make the T20 World Cup semifinal. So rankings are a farce. Pakistan are currently ranked number 2 in ODIs, but their one-day cricket is so stale. It's so stagnant. So there's no point. If you add stakes, if you give context, it allows teams to play towards something, right? Maybe you have World Cup qualification going along the same lines. Why are Sri Lanka having to play the qualifiers? Because their rankings fall. To add on that, bring back the quadrangular, give the quadrangular wins more important than bilateral wins. Bring back the tri series, give the tri series more points.
Give context, raise the stakes, the teams will automatically start playing better cricket. Since you've raised the stakes, you've seen Netherlands beat teams, you've seen Afghanistan beat Sri Lanka, you've seen Afghanistan beat Bangladesh. Add stakes, it will make it much more interesting than just watching teams go through the motions just for the rankings. Very, very bad scene. चलिए last few questions. Shupon कह रहे हैं sir after 21 when Virat left captaincy I don't feel that confident on Indian team. मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ. Sir, I'm not a big fan of Kohli's white ball captaincy, but I got confident when India played in Kohli's captaincy. I agree with you. I'm on the same page, my friend. Same page. Shanawaz कह रहे हैं I follow you and your friend Vimal Kumar for updates, analysis, and news because you guys do great work. Thank you, my friend Shanawaz. Thank you, thank you, thank you. Very kind that you compared me to my old friend and former colleague at पता है आपको विमल कुमार was the first person मैंने इनको बुलाया था अपने शो पर एक दिन विमल कुमार was the first person that pushed me onto TV ये 2012-13 की बात है वो नवभारत टाइम्स सॉरी वो IBN 7 में थे मैं IBN इंग्लिश चैनल में था एंड आई वाज नॉट डूइंग टीवी आई वाज डूइंग वेब मैं वहां का स्पोर्ट्स संपादक था नेटवर्क 18 का विमल पुश मी एंड पुश मी एंड पुश मी ओवर मेनी कप्स ऑफ टी एंड कॉफी कि तुम आ जाओ टीवी पे तो मैंने 3 शोज किए थे एक मशहूर एंकर हुआ करते स्पोर्ट्स के दारेन शाहिदी वो मैं मनिंदर सिंह पूर्व इंडियन स्पिनर हम तीन ने 2-3 शोज किए थे IBN 7 के चैनल पर मैं तो बड़ा घबराया था आई टू हेट द लाइव सिनेरियो एक वो दिन था और आज 10 साल के बाद अगर मैं आपके सामने आ चुका हूं तो इट्स in some small indirect way it's because of Vimal Kumar pushing me so thank you for putting me in the same category as my good friend Vimal Wah. Do you think every team should be made to play World Cup qualifiers irrespective of their ranks? No, because then the rankings are pointless, right? If teams are playing consistent cricket, you have to also give that some value. Will Kuldeep make it an ODI World Cup squad? Oh, absolutely. Kuldeep is India's number one spinner. He's taken 29 wickets in 15 games in the last 12 months. He's played 16 games to Chahel 6. Kuldeep will play every single World Cup match. Chahel won't get many matches. Chahel might miss the squad. Kuldeep is India's number one ODI bowler. 29 wickets in the last 16 matches. He plays every match. So ये क्या सवाल था निहार T20 वर्ल्ड कप 24 में 20 टीम्स होगा आप इस चीज को कैसे देखते हो 20 ज्यादा है मेरे ख्याल से 16 टीमें ठीक है 20 बहुत ज्यादा है क्योंकि वो टूर्नामेंट एक ही महीने का है तो 20 टीम्स में खिलाना बड़ी बड़ी दिक्कत होगी हेलो अतुल हाउ यू डूइंग हाउ इज द वेदर इन इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड मैन बारिश हुई सुबह अभी भी बादल छाए बट इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड विल सैमसन प्ले टुडे आई होप सो बट आई नो ही वोंट विल उमरान ओपन द बॉलिंग नो ही वोंट बट उमरान विल प्ले सतीश कह रहे हैं yesterday when watching match I feel Indian fast bowling is lazy not lazy but pace नहीं है ना मुकेश कुमार 135 डाल रहे हैं हार्दिक पांड्या 135 डाल रहे हैं उमरान मलिक 150 डालते हैं लेकिन उनको इतना लेट दिया ऑप्शन तो आई गेट वे यू कम प्लस ऑल्सो यार जब स्पिनर 7 विकेट लेते हैं तो पेसर्स ने बहुत कम ओवर डाले ना आकाश कह रहे डोंट यू थिंक लाइक द 90s there wasn't any league cricketers don't have that much camaraderie when they play for national teams of course, because you're playing so many leagues, you're basically playing the IPL, and IPL you're all playing for the same goal. You're earning big bucks. You're traveling together. So yes, there's friendship, but I think the edge has been taken off. Beneath Kere, don't you think India should really start looking for a proper face bowling all rounder? I do. I've been saying this for 20 years, but who? We don't have any, my friend. Do you see anyone on the domestic circuit bowling 145 and scoring runs? है but not of that pace or quality तो भाई it's not like India aren't looking they're looking the selectors and the scouts look from the north to south पर है ही नहीं कोई ना प्रॉब्लम ये संजू को ओडीआई में खिला मुश्किल है but 5 T20 मैच तो मिलने चाहिए वहां भी कहां चांस ओवर ना करवाए I agree with you he should but I think he'll probably get at least 3 of those matches you cannot take him there and make him sit for 8 matches on the bench T20 है जरूर खेलेंगे Can we crown this series as the most boring series of the decade? Actually, it's a good question, but you actually cannot because you don't know India क्या करेगी आज India क्या स्यापा करेगी आज Last match they made it interesting because of how the chase was, they totally hijacked the innings. They said Ishan opening, Sky 3, Shardul 6, Virat Kohli की बैटिंग नहीं आई रोहित तो ये सब देख के at least कुछ interest था I've actually seen a lot of boring series, especially when Bangladesh, Ireland type series. I find those far boring because I mean, at least इसमें थोड़ा मजा आया कि यार ये क्या blankety blank चल रहा है. So of course, at the contest, no fun. West Indies 114 bowled out in half the overs.
But the way that India shot themselves in the foot by struggling, they should have won that match by 10 wickets in 20 overs maximum, but they struggled. They lost 5 wickets. और फिर जो गड़बड़ करी बैटिंग में, it made it somewhat interesting. स्पोर्टी इंडिया क्लब, क्या नाम है? स्पोर्टी इंडिया क्लब, बढ़िया है. Lots of love from Vizag, thank you. आप क्या लगता है, उमरान को नई बॉल देनी चाहिए? नई बॉल मत दो, क्योंकि उनका he'll spray the ball everywhere. He needs to bowl around the 10th to 20th over के बीच and then come back just before the death, if not the death. Start मत कराओ इनसे, नहीं. Crickmania is back. क्या बात है? Irrespective of the conditions and opponent, India should target 400 first inning score. That should be the intent to win. Exactly. That's how England changed their white ball approach. That's how they won the World Cup. That's how they won the T20 World Cup. So they should. I agree. And I think in India ke andar, we've seen this year, Khaskar against Sri Lanka, they got very close to 400. Shuman Gill got a 200. They're getting around 400 anyway. So I don't think it'll be a problem in the World Cup. Hoga. क्रिकेट लवर्स, अनदर ग्रेट नेम. टेस्ट मैच को भी कोई लीग होना चाहिए. नहीं यार, जगह ही नहीं है ना. टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दो यार, कोई लीग. ये वैसे ही कॉर्पोरेट लीग्स आधे में मुझे बहुत शक होता है. लेट्स नॉट गेट इट. डब्ल्यूटीसी इज डूइंग वेरी वेरी फाइन. इट्स अ ग्रेट फॉर्मेट. बड़ा मजा आता है डब्ल्यूटीसी में. आप जगह ही नहीं है. नहीं है भाई. आज का प्लेइंग 11 क्या लगता है? मेरे ख्याल से वही होगा यार. अनलेस देखो किसको ड्रॉप करेंगे. मुंबई लॉबी गारंटी करेगी कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन खेलेंगे. आ, जड्डू को ड्रॉप नहीं करेंगे. विराट को ड्रॉप नहीं करेंगे. मे बी यू ब्रिंग इन अक्षर पटेल for Mukesh, or you bring in Jaidev, but the way that Rohit Sharma praised Mukesh, I don't think we'll see any changes. West Indies Netherlands match देखा आपने? बिल्कुल देखा मैंने बिल्कुल. Okay, last question. I gotta go. No, I started to watch cricket matches from 2012 only. Because before Kohli, I used to see scorecards, but now I can't see the full match. आपने सर 2012 से शुरू किया भाई. आपकी उम्र क्या है, अगर मैं पूछ सकता हूँ? मैं तो यार 95 से देख रहा हूँ, but I'm obviously much older. Okay, last question. Why does India keep repeating the same bowler limit over? Why don't they try young bowlers in IPL like Yash Thakur, Harshit Rana? A lot of young bowlers have come through in the last few years. There was a time, especially in 16, 17, they tried a lot of young bowlers. Barinder San came through, Jasprit Bumrah. But this is a very cyclical thing. It's because you brought in younger bowlers before and they do well. That's why a lot of bowlers are not getting a chance. So it's not like they haven't. They've actually done it a lot more than you'd probably think. But just right now, it's because it's not happening right now because they're confused. They brought Shivam Mavi, they brought in Arshdeep Singh, they brought in Avesh Khan when they were just a few IPL seasons older. But I think right now Harshit Rana has not done that much in the IPL. Has he played IPL? Couple matches. Yash Thakur का time आएगा. I think Mohsin Khan का time आएगा. It happens, but just right now we're going through a phase where you're not seeing. Do Mumbai lobby exist? आपको क्या लगता है? सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे क्यों खेले? The guy has a terrible one-day average even before the last match. Why did he bat at number 3? Why did Virat Kohli bat at number 8? Why did Ishan Kishan? क्या वो बात कर रहे हो अनीश? Is Siraj ankle a big issue? Let's hope not. और इसी बात पे दोस्तों 6:30 बज चुके. I need to get off the stream. Thank you for taking out half an hour from your time on a busy Saturday afternoon. Enjoy the match. Enjoy your weekend. मैं आपसे मिलूंगा मंडे को एक और लाइव स्ट्रीम के साथ. Enjoy your weekend. Take care. जय हिंद.